Hello my viewers, so welcome back to the channel that is called as Mathematics by Rumina, and today we are here to discuss about integrals, and we are basically going to talk about indefinite integrals. मैंने इस पे ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं. आई डोंट नो यू पीपल हैव सीन इट और नॉट. I know that you people have not seen it, so it's a very humble request that please go and see the videos because already बहुत सारा कंटेंट मैं इस पे एटलीस्ट दे चुकी हूँ. सिंस आई नो कि आप लोगों को बहुत डर लगता है इस पर्टिकुलर चैप्टर से, एंड इन दिस क्लास आई एम गोइंग टू जस्ट टॉक अबाउट इनडेफिनिट इंटीग्रल्स. बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रही हूँ क्लास 12th का रिविजन. हम लोग पहले क्लास 12th को रिवाइज करेंगे, फिर हम लोग इसका जेई मेंस करेंगे और फिर हम लोग इसका जेई एडवांस करेंगे. ठीक है ना, तो एक सीक्वेंस में मूव करेंगे. हम लोग रैंडमली मूव नहीं करने वाले हैं. वी आर गोइंग टू मूव इन अ सीक्वेंस सो दैट कोई डाउट ना रहे आप लोगों को कि हाउ द थिंग्स आर गोइंग टू मूव. मैं हर एक चैप्टर की खुद की प्लेलिस्ट बना रही हूँ सो दैट उस प्लेलिस्ट के अंदर पूरा कंटेंट आप लोगों को मिल जाएगा. क्लास 12th और 11th, अगर 11th का तो 11th का कंटेंट. सो बेसिकली क्लास 11 एंड 12th योर जेई मेंस एंड जेई एडवांस सब कुछ एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएगा. बट हाँ, ऑब्वियसली पार्ट्स बेटा मैं बहुत सारे बनाऊंगी सो दैट पार्ट्स में आपको कोई डाउट ना रहे एंड एवरीथिंग विल बी क्लियर फॉर यू पीपल. ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी बेसिकली योर पार्ट 1 for indefinite integrals, and yes, it is your class 12th part 1, remember that. Okay, and yes, it is a power of mathematics. और कुछ भी नहीं. इंटीग्रल्स क्या है? इंटीग्रल्स पे ही पूरी मैथ्स बेटा हमारी कहीं ना कहीं डिफाइन हुई है. सो येस, वी हैव टू बी गिवन वेरी मच इंपॉर्टेंस टू इंटीग्रल्स एंड इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इवन फॉर योर क्लास 12 बेसिकली इफ आई टॉक अबाउट. बेटा जस्ट टेक इट एज अ रिविजन फॉर योर 12th बिकॉज जो बच्चे हैं जिनका अभी जेई मेंस अप्रैल अटेम्प्ट में होगा, सबसे पहले बेटा आपको मैं बता दूं एक चीज़ कि हाँ बिल्कुल आप लोग अपना पहले 12th का बोर्ड पे फोकस करो, उसके बाद फोकस ऑन अप्रैल अटेम्प्ट. बिकॉज वो अगर अच्छा नहीं हुआ तो इन शॉर्ट आपका जेई मेंस भी अच्छा नहीं जाएगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर क्लास 12th, उसके बाद जेई मेंस है. ऑब्वियसली जेई मेंस इंपॉर्टेंट है बट हाँ, तो मैं जेई मेंस का भी साथ साथ ही डिस्कस करूंगी इस चैप्टर के साथ. ओके, इनडेफिनेट काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इफ़ आई टॉक अबाउट सीबीएसई में तो काफ़ी अच्छे नंबर का ये चैप्टर कैरी करता है खुद में ही. ये खुद में ही चैप्टर ऑलमोस्ट 10 नंबर का आ जाता है एंड AOI डिफरेंशियल इक्वेशन सबको मिक्स करके तो ऑलमोस्ट आपका आई थिंक 20 मार्क्स के आसपास की वेटेज क्लास 12th में कैरी करता ही करता है. एंड इफ़ आई टॉक अबाउट द रेस्ट ऑफ द पार्ट, तो जेई मेंस में भी इसके 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं हर एक सेट के अंदर या हर एक शिफ्ट के अंदर आई वुड से. नाउ लेट्स स्टार्ट एंड कंटिन्यू द क्वेश्चन द कंटेंट दैट वी आर गोइंग टू स्टडी. आज सब कुछ नहीं पढ़ेंगे, आज हिस्सों में पढ़ेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सम स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स, आज हम लोग ये वाला पार्ट कवर कर देंगे. देन इन द नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू मेक फॉर यू इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन ऑफ एल्जेब्रिक फॉर्मेट्स, इन दोनों को एक साथ कर दूंगी. इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एक साथ, एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला. ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला मैं अलग से कुछ वीडियो नहीं बनाऊंगी, इसके अंदर ही इनको कवर कर दूंगी. ठीक है, एंड डेफिनेट ऑब्वियसली मैं उसके बाद ही करवाऊंगी. नाउ देयर आर सम बेसिक फॉर्मूला जो मैंने यहाँ पे लिस्ट डाउन कर दिया है. आई नो कि सबको बेसिक्स पता है कि हाँ जो डेरिवेटिव होता है दैट इज इनवर्स ऑफ इंटीग्रल्स. जो भी हम डेरिवेशन के अंदर कर रहे थे उसका अब ऑपोजिट हम लोग बेसिकली इंटीग्रल्स के अंदर कर देंगे. दैट्स इट. सो नाउ द फर्स्ट फॉर्मूला दैट वी हैव ओवर हेयर इज इंटीग्रल ऑफ 1 ds दैट इज x प्लस सी. ए का क्या होगा? ए इज अ कॉन्स्टेंट, तो दैट वुड बी ax प्लस सी. एक्स की पावर n, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आई वुड से. ये पेपर में बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिल जाएगा. सो दैट इज इंटीग्रल ऑफ एक्स की पावर n dx दैट इज एक्स एन प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी, वेयर सी इज अ आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट बेसिकली. ओके, देन वी हैव इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स दैट इज माइनस कॉस एक्स प्लस सी. इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स इज साइन एक्स प्लस सी. Integral of sec square x dx is tan x plus c. Integral of cosecant square x dx is equals to minus cot x plus c. Integral of secant x tan x dx is equal to secant x plus c. Integral of cosecant into cot x dx that is equals to minus cosecant x plus c. Integral of 1 upon x dx that is log of mod x plus c. This ln means that your natural log. Integral of e की पावर x dx that is the same as it is, that is e की पावर x, just the c is vector that is your arbitrary constant part. So e की पावर c plus e की पावर x plus c. Now one of the most important one again, integral of a की पावर x dx that is a की पावर x log a plus c. Okay, and these are some of the different integrals formula for your
different functions. That is for rational functions. What all we have? That is 1. Basically, it's 1 upon 1. So that would be x plus c. Integral of a would be ax plus c. Integral of 1 upon x dx would be log of x plus c. ये हम तीनों ऑलरेडी पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं. एंड फॉर योर इरेशनल नंबर्स, ये आपके लिए कुछ यूनिक फॉर्मूलाज है, बिकॉज यू नो ना डेरिवेटिव क्या होता है साइन इनवर्स एक्स का. दैट इज 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. सो इंटीग्रल क्या होगा? 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. दैट इज योर साइन इनवर्स एक्स. सिमिलरली इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. दैट इज योर tan इनवर्स एक्स प्लस c. then integral 1 upon mod of x root 1 minus x square dx, that is sec square, sorry secant inverse x plus c. यहाँ पे mod हो या यहाँ पे mod ना हो गए, यहाँ पे इस तरीके से फंक्शन लिखा हो. Don't worry about this. In both the things you can just use your formula secant inverse x plus c. That's it. Okay. So these were the some simple formulas. Now these are also very important formulas for your exponents functions. That is integral of x की power n dx. That would be x n plus 1 upon n plus 1 plus c. Integral of ex dx, that is ex plus c. Integral of ax dx, that is your ax upon log a plus c. बेटा इट इज़ नथिंग बट द रिविजन ऑफ ऑल द फॉर्मूलाज. यहाँ पे लॉग के कुछ फॉर्मूलाज है, ये आपके जेई मेंस के लिए है. मैंने बाय चांस यहाँ लिख दिए थे, सो सॉरी. ये जेई मेंस में मैं कवर करूँगी आप लोगों के लिए. ओके. एंड नाउ देर आर सम स्पेशल फंक्शंस विच वी हैव इंटीग्रल्स. ये मैं आपका आगे कवर करूंगी, सो मैं इसको आगे ही डिस्कस करना पसंद करूंगी. राइट नाउ आई एम जस्ट मेंशनिंग दैट इफ यू आर कंफर्टेबल विद दीज फॉर्मूला यू कैन जस्ट रीड इट वंस. इन द लास्ट ऑफ द वीडियो मैं आपके पास एक फॉर्मूला लिस्ट शेयर कर दूंगी फॉर योर इंटीग्रल चैप्टर. मेरे पास वो 3 या 4 पेजेस के फॉर्मूलाज इसके ऑलरेडी लिखे हुए हैं. मैं वो शेयर कर दूंगी बिकॉज वो आपके ऑलमोस्ट पूरी आर डी शर्मा को सॉल्व कर सकता है. आपके कुछ क्वेश्चन ऑलमोस्ट यू विल नॉट बिलीव ऑलमोस्ट 50% ऑफ क्वेश्चन जेई मेंस की भी सॉल्व कर सकते हैं वही फॉर्मूला लिस्ट. सो मैं वो शेयर कर दूंगी. यू कैन जस्ट गो थ्रू दैट फॉर्मूलाज एंड एक बार अच्छे से रिव्यू कर लेना हर चीज़. ओके. Now let's start with the first question that we have. So the question is integral 3 root x plus 1 upon root x dx. So what is going to be the answer for this question? It's going to be your integral 3 into x की पावर 1 by 2 plus यहाँ पे आएगा x की पावर minus 1 by 2 dx. Let's simplify it. तो यहाँ से simplify करके क्या आएगा बेटा मेरे पास? That would be very simple. That is 3. I'm just going to use a formula that is integral of x की power n dx, that is equals to x n plus 1 upon n plus 1 plus c. Beta, if you know the question, I will just request you just solve it along with me. You can just check the answer in the end. There is no need to listen everything. If you don't know the concept, then try to listen each and every word that I'm saying. But if you already know the question, just try to finish the answer and then you can just match your answer from me. So it will be 3. Now 1 plus 2 plus 1, that is basically 3 by 2 upon 3 by 2. Plus यहाँ पे भी same चीज़ x की पावर minus 1 by 2 plus 1, that is take the LCM, so you will get 1 upon 2 upon 1 upon 2. So 2 over here plus c. Now 3 and 3 cancel. Just bring this 2 in the numerator part. So 2x की पावर 3 by 2 plus 2x की पावर 1 by 2 plus c, and yes, that is your answer. That's it. There is no need to simplify even. That is going to be a final answer. Simple answer. I know it was easy thing. It was not, I would not say that it was very much difficult. It was something which I think everyone can apply, and it was an easy concept to understand basically. I hope that the concept is clear. Now the next question, integral of 2 cos x upon 3 sin square x dx. Believe me, all these questions are previous year questions. I just forget to mention that in the starting. ये सारे कहीं ना कहीं 2010, 2012, 2014, 2016, 18 जब भी पेपर्स हुए सबके सब कुछ ना कुछ प्रीवियस ईयर्स में हैं. और ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन थे जो बच्चों के गलत हुए हैं, जिनमें बच्चों के मार्क्स कटे थे, जिसकी वजह से मैथ्स में बेसिकली उनके मार्क्स कम आए थे. मैंने वो वाले क्वेश्चन सारे पिक किए हैं. तो बेसिकली मैं सीबीएसई के अकॉर्डिंग ही मूव कर रही हूँ, बट हाँ जो डिफिकल्ट पार्ट है बेसिकली मैं वो उठा के ला रही हूँ बेटा आपके लिए. सो नाउ इंटीग्रल 2 cos x अपॉन 3 sin square x dx कैसे सॉल्व करेंगे? जस्ट टेक 2 upon 3 आउटसाइड द इंटीग्रल. सो व्हाट वी आर लेफ्ट विद, जस्ट सिंप्लीफाई इट अ लिटिल बिट. cos x sin x इंटू 1 upon sin x dx. ओके, मैंने बस इसको खोल दिया. So what is cos upon sin? That is cot. So 2 upon 3 integral of cot x into what is 1 upon sin? That is basically your cosecant x dx. Now if you remember in the starting only, I have mentioned one formula for your people. That is
cosecant x into cot x is equals to minus cosecant x plus c. So just use this same formula over here, and it's going to be your minus 2 upon 3 cosecant x plus c. And yes, it is your c is the arbitrary constant. You have to mention that where c is arbitrary constant. Okay, if you're not going to mention this c part, you're for sure going to lose your half marks in your boards as well. This was the answer. Now the one was the most simplest question. ये बेटे simplify करना पड़ेगा because direct तो हम इसको integral नहीं कर सकते हैं. So for simplifying, just factorize it, nothing else. So that would be integral. Just take x square as common. So we are left with x minus 1 plus 1 x minus 1 upon x minus 1 dx. Just solve it out. That would be x square plus 1 into x minus 1 upon x minus 1 dx. So x minus 1 cancel. Integral किसका करना है बेटा मुझे? Integral would be x square plus 1 dx. So just simplify it, and that would be x की power 3 upon 3 plus x plus c. Yes, that was your answer. That's it. I hope that this much would be surely clear to every one of you. It was not difficult, but हाँ थोड़ा फैक्टराइज करना था. तो आई डोंट नो कितने बच्चे सोच पाएंगे कि हाँ ये हमें फैक्टराइज करना है. ये प्रॉपरली एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन था. Now, yeah, one of the very good questions. Integral of sine square x minus cos square x upon sine square x cos square x dx. ये क्वेश्चन था बेटा मेरे पास. Now, how to simplify it? If I want, can I just rewrite this statement as integral sine square x upon, just take it separately, okay? Denominator part basically I'm talking about. Sine square x upon sine square x cos square x minus cos square x upon sine square x into cos square x dx. Okay, I got this. First of all, just put a bracket. Cancel, 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 cancel. So what I'm left with, if you just see it very carefully, so I'm simply left over here with 1 upon cos square x minus 1 upon sine square x. Just write it properly, arrange it. So what I will get from here, I will simply get integral. Now what is 1 upon cos? 1 upon cos is quite simple to say. It is your secant square x. This formula we have done in your class 10th. 1 upon sine square x, that is your cosecant square x. Sorry, that is cosecant, not cos. Yes, cosecant square x dx. Now I can just separate the integral. So that would be integral of secant square x minus cosecant square x. So that would be, what is integral of secant square x? That is your tan x. Correct. And then we have tan x, then minus cosecant square x. So that would be minus cot. So that is going to become plus cot x plus c. And yes, this full is going to be the answer for the above integral. Okay. Yes, this is one of the very good questions. Now I'm just going to improve the level. Now I'm going to bring some of the trigonometry questions so that you can just think that how you're going to solve the questions. So integral cos 2x plus 2 sine square x upon cos square x. Now what is the formula for cos 2x? There are some formulas for cos 2x. I will just write it properly. Sorry for erasing it. Yeah, I'm just going to write it over here. Yeah, so cos 2x is equals to cos square x minus sine square x. It is also equals to 2 cos square x minus 1. It is also equals to 1 minus 2 sine square x. Now which formula is going to be the perfect one to use over here? If you just see one thing very carefully, that is cos 2x, this part, that would be equals to your 1 minus 2 sine square x. If I just use this part, so this minus 2 sine square x and plus 2 sine square x will get cancelled out. So yes, it's the best thing to use it over here. So that would be integral 1 minus 2 sine square x plus 2 sine square x upon cos square x. Yes, that's it, beta. So just see very carefully. If you will see, can I just cancel this part and this part? So what we are left with? Now we are left with very much simple integral, and that is your integral of 1 over cos square x, which is simply equals to your integral secant square x dx, which is equals to your tan x plus c.
Okay. Yeah, so tan x plus c, and this is the answer for your desired integral part. I hope it must be clear. It is not at all a difficult question. It was a normal question. It is a little, I would say, difficult. Like when it comes in the board paper, many students were not able to solve this question. Let's see how we have to solve it. So we know over here, whenever I have a ki power m plus n, so I can just write a ki power m into a ki power n. And whenever we have a ki power m minus n, so that would be a ki power m upon a ki power n. So by using these two exponents properties, can I just write 2 ki power x into 2? So just take your 2 outside. So that means you are left with 2 ki power x upon 10 ki power x dx. Okay, I'm just separating the integrals as well. Now 5 ki power x upon 5. So just take 1 upon 5 outside the integral. So we are left with 5 ki power x upon 10 ki power x dx. So can I just write this as 2 integral 2 upon 10 ki power x dx minus 1 upon 5 integral 5 upon 10 ki power x dx. Just see one thing very carefully over here, that if you want, you can just cancel this and simplify it a little more. So that would be 1 upon 5, 1 upon 2. So now what is the integral of 1 upon 5 ki power x dx? So you know we have just done a formula, a ki power x dx, that is equals to a ki power x log x plus c. Okay, it can be a modulus as well. Since we know it is a positive quantity, so there is no need to take a modulus sign. Okay, so that would be 2 bracket 1 upon 5 ki power x upon log, and that would be log, it's a natural log, so log e 1 over 5 minus 1 over 5 a ki power x, that would be your 1 upon 2 ki power x, 1 upon 2 ki power x upon log e, and that would be 1 over 2 plus c, and where c is the arbitrary constant. That's it. And yes, this was your answer. Believe me, when it was come in previous year questions, it just come one time, and it was such a difficult question for the students. Almost 80% students were not able to score 100 marks because of this question only. It was a difficult one with no doubt. And thank you so much class for viewing my video. For queries, you can just send me on this email ID, or you can even send me your content on the comments. Best to just comment me, and I'm there to resolve your doubts. As many students have said me that please bring some 12th series so that we can just study from you. So yes, this is a 12th series now. I know मैं सिर्फ रिविजन करवा रही हूँ आप लोगों को, थोड़ा इसलिए मैंने फास्ट पढ़ाया. But if you still have a doubt, you can just comment below. And beta, even if you are not able to get the question anything, just comment below. I will make a separate question video for that, so that the things are more clear to you people. Thank you so much. Enjoy yourself, and please start studying now. It's a very huge time, and your paper is just today. I think it's your yeah, today the date is yours 17th of February, so the time is very less. So I will just request you people that only 20 days or more, so just start studying and do your best. Thank you so much. Bye bye you all, and I need your current support children, so that I can just bring so many new content and new questions for you. Thank you so much. Bye bye. Take care.